सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिट्समूविंग, ऑलवेज ऑन द मूव। तो अभी हम लोग आए हैं एमटीडीसी के बोट क्लब में, जो कि एक बोट क्लब है स्पेसिफिकली एज द नेम सजेस्ट। सो इट्स एट नासिक, गंगापुर रोड। ये गंगापुर डैम से कनेक्टेड है। ये एमटीडीसी का है, दैट्स व्हाई इट इज़ मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट ओनली। सो लेट्स सी, मैंने गूगल किया था तो वहाँ पे मेंशन था देयर इज एन एंट्री फी ऑफ 70 रुपीज़ इन हियर। भी एंटर करते हैं और देखते हैं क्या है एग्जैक्टली एमटीडीसी का बोट रिसोर्ट एंड व्हाट ऑल यू कैन एक्सपेक्ट हियर। As I told you, the charges are 70 rupees for adult and 30 rupees for kids between 5 to 14 years, or under 5 years kids are free. So these are some charges of the activities which you can do here. You can see there's a difference for weekday and weekend rates. So we have entered in the boat club and they have charged us 70 rupees per person. This boat club looked pretty classy. It's not important for you to do all the boat activities. You can just pay the entry ticket and hang out in here. 70 rupees per person is a reasonable price. I mean, not over expensive or something, or ज़्यादा pricing नहीं है. And looking at the surrounding, I feel कि ये सारा ambience maintain करने के लिए definitely कुछ price लगती होगी. So they are charging reasonable. और जो एक्टिविटीज़ की चार्जेस है वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बोर्ड है वो दिखाया है. द एंट्री टिकट विच वी पे इट्स नॉट रिडीमेबल. आपको जो भी एक्टिविटीज़ करने हैं उसके अलग से टिकट अंदर मिलते हैं, वहाँ पे लेने हैं. दिस अ स्मॉल रेस्टोरेंट अराउंड हियर. अगर आप देखोगे तो यू गेट फूड लाइक पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज एंड एवरीथिंग. सो lot of scope. You can hang out in here with your friends, family, can spend reasonable time around here. क्योंकि यहाँ का अगर आप देखोगे लुक एंड एम्बियंस बहुत बढ़िया है. और अगर आप बोट एक्टिविटीज़ करते हो तो डेफिनेटली आपका टाइम उसी में इन्वेस्ट होगा. You can do so many different type of rides in here. There is a banana ride, there is a basic general boat ride, there is a bike, water bike ride. So बहुत सारी चीज़ें हैं करने को. So it's nice. The ambience is good. The music is going on. Guys, the view is mesmerizing. If you go for any rides, so that's. So this is the edge where you can enter into different type. Guys, this is an amazing place to hang out with your friends. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला कि अगर आप बोटिंग भी नहीं कर रहे हो तो भी ये बहुत ही बढ़िया प्लेस है जस्ट टू चिल आउट विद योर फ्रेंड्स. अगर आप टीनेजर्स हो, कॉलेज गोइंग हो, तो आई विल highly recommend you this place. 70 rupees is an entry fee which is like nominal.
बट आप आके यहाँ पे काफ़ी लंबा टाइम स्पेंड कर सकते हो. यू कैन टेक n number of pics. So possibility of investing your time with your friends and family is high. So I will highly recommend you MTDC Boat Club Nashik for you to hang out. And और क्या है, I'm absorbing the calmness of this climate. बोट राइड अभी नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे अभी आज क्राउड नहीं है, तो ज़्यादा लोग नहीं कर रहे और मैंने काफ़ी बार बोटिंग की हुई है. सो एट दिस मोमेंट आई एम नॉट इन अ मूड ऑफ गोइंग फॉर अ बोट राइड. बट अदरवाइज़ अगर आप एडवेंचरस हो तो वो भी चीज़ें हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. बट देन थोड़ा सा आपका ट्रिप हियर विल गेट एक्सपेंसिव क्योंकि बोट राइड्स आर काइंड ऑफ एक्सपेंसिव. बट अगर आप जो स्मॉलर राइड्स है जो कि 300 पर पर्सन वगैरह से स्टार्ट हो रही है, सो ऐसे नहीं है कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है. डिपेंड्स अपॉन विच राइड यू आर चूजिंग, उसके ऊपर है. बट आई विल से द डैम वाटर इज़ डैम कूल एंड इट इज़ वर्थ अ विजिट. आई वोंट रिग्रेट कमिंग हियर and I will definitely recommend this place for you guys to visit. So if you like my videos, then kindly like, share and subscribe to my channel Mittsmoving, always on the move. I think I'll head back now and we'll come up with new place, new vlog, new locations and new ways to hang out. So stay tuned to my channel and stay happy.